Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामाचंद्रन। सुषमा जी नमस्कार, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू सोनू। और अब हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। Key domestic indices hit fresh lifetime highs even as global cues were negative. Sensex achieves 45,500 mark. Nifty ends near 13,400 level. Rupee strengthens 37 paise against the US dollar and global stocks logged losses amid surging COVID-19 infections and concerns over Brexit. प्रमुख घरेलू सूचकांक ताजा उच्चतम स्तरों पर, हालांकि वैश्विक संकेत नकारात्मक रहे। सेंसेक्स 45,500 के स्तर से ऊपर पहुंचा, निफ्टी 13,400 के स्तर के करीब हुआ बंद। रुपया डॉलर के मुकाबले 37 पैसे की मजबूती में रहा और कोविड-19 संक्रमण में भारी वृद्धि और ब्रेक्सिट पर चिंताओं के बीच वैश्विक शेयर बाजार गिरावट में रहे। प्रमुख घरेलू सूचकांक आज तेजी जारी रखते हुए ताजा रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर जा पहुंचे, हालांकि वैश्विक संकेत नकारात्मक थे। सेंसेक्स पहली बार 45,500 के स्तर को पार कर गया और निफ्टी 13,400 के करीब बंद हुआ। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.4% की वृद्धि से 182 अंक बढ़कर 45,609 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.28% की तेजी से 37 अंकों की वृद्धि दर्ज करता हुआ 13,393 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां सेंसेक्स के मुकाबले प्रदर्शन कम अच्छा रहा और गिरावट का रुख रहा। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.16% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक 0.29% की गिरावट में रहा। Key domestic indices today continue their rally to hit fresh lifetime highs even as the global cues were negative. The BSE Sensex achieved 45,500 mark while the NSE Nifty ended near 13,400 level for the first time. Sensex climbed 182 points, 0.4% to settle at 45,609. The NSE Nifty 50 index also surged 37 points, 0.28% to settle at 13,393. The broader market at the BSE underperformed the Sensex as the BSE mid-cap index fell 0.16%, while the BSE small-cap index declined 0.29%. In the Sensex pack, shares of 16 companies climbed while 14 logged losses. Ultratech Cement was the top gainer as it climbed 3.2%, followed by TCS, which gained 2.2%. Reliance climbed 1.8%, HCL Tech rose 1.1%, and Infosys and SBI added 0.8%. On the other side, Sun Pharma declined 2.4% and IndusInd Bank fell 2%. NTPC and Tech Mahindra both ended around 1.5% down. In sectoral indices, 13 out of 19 sector stocks declined. The IT and energy sectors gained 1.1%. Tech and realty both appreciated around 0.8%. On the other hand, telecom declined 1.1%, power fell 0.9%, while metal, utilities and healthcare slipped around 0.7%. Out of 3,131 companies which traded today at the BSE, shares of 1,493 companies gained, 1,461 declined, and 177 remained unchanged. Shares of 302 companies logged 52-week high, while 39 companies witnessed 52-week low. Sushma, once again, a warm welcome to you on Market Mantra. Thank you. Sushma, what's your take on the market achieving a lifetime high? How do you see the futures and options market and the behavior of FIIs who have been net buyers in the market, with DIIs being the net sellers at the end of this calendar year, where they have traditionally sold instead of buying? Yes. So, of course, this has been an unusual year. This is not a normal year. And the fact is that things are looking up right now in terms of, if you take holistically,
largely because of the fact that there are so many chances of these new vaccines coming into the market. And the big news today, of course, is that the UK has actually launched its mass vaccination program. The other thing is that in India, you have several countries which have now, several companies which have now applied for emergency authorization. So that is certainly the good news on the horizon, because, as soon as, industry and all the economic players in the market are looking at the decline of COVID to ensure that economic activity steps up. And apart from that, of course, the market has been rising very fast. As I said, one factor is, of course, the good news on the vaccine front. The other factor is that on the domestic front, there have been, indicators that there's likely to be a V-shaped recovery. Now, we cannot say that very categorically, but it looks as if there's been quite a sharper revival than expected. Most of the investment agencies are now revising their data for growth in this current fiscal. Are improving their estimates. Of course, there will be a contraction, but the level of contraction is now expected to be much less than anticipated in 2021. So 2021 fiscal. So these are the factors that are really buoying the market. Of course, we are also looking on the global stage, the fact that the transition in the United States to another more, stable presidency, as you can say, and perhaps there might be less of US-China friction. It would be there, but it will certainly be less. सुषमा जी, आपने बात की जीडीपी के जो एस्टिमेट्स हैं वो अधिकांश एजेंसीज ने उनको अपग्रेड किया है। इनफैक्ट आरबीआई की जो पॉलिसी आई है ट्यूसडे को, उसमें उन्होंने कहा है कि अब जो करंट क्वार्टर है इससे पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, और करंट फिस्कल के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन को 9.5 से घटाकर 7.5 कर दिया है। सो इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएंगी, और अपना जो उन्होंने स्टांस पे एकोमोडेटिव रखा है उसका क्या जमीनी तौर पर उसका क्या मतलब है? देखिए, ये जो आरबीआई ने कहा है, आरबीआई ने भी यही कहा है कि उनको इतनी उम्मीद नहीं थी कि अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी तरह से रिबाउंड करेगी। सब मेरे ख्याल में, जैसे मैंने कहा, कि सारी जो इकोनॉमिक एजेंसीज हैं उनका ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि धीरे धीरे शायद रिकवरी होगी। इस वक्त सारे जो आंकड़े आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि काफी तेजी से रिवाइवल हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी देख लीजिए, और कृषि क्षेत्र में भी कृषि क्षेत्र तो था ही, पैंडेमिक के थ्रू में सारा पॉजिटिव ट्रेंड, पॉजिटिव ग्रोथ था। लेकिन जो जीएसटी कलेक्शंस हैं वो बढ़ गए हैं, वो 1 लाख करोड़ के ऊपर आ गए हैं 2 महीने के दौरान, 2 months in a row। हालांकि टारगेट तो उनका थोड़ा सा इससे भी ऊपर है, लेकिन ये 1 लाख करोड़ के ऊपर आ गए हैं। ये बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर है। हाँ, जो आप कह रही है अकोमोडेटिव स्टैंस है, अकोमोडेटिव स्टैंस माने कि रिजर्व बैंक जो है ये बिल्कुल ही बैंक की तरफ क्रेडिट जो ऑफ टेक है उसके बारे में दे विल ट्राई टू मेक ईज लिक्विडिटी नॉर्म्स फॉर बैंक एंड मेक थिंग्स इजियर फॉर बैंक। तो आरबीआई भी यही देख रहा है कि वो नॉर्मली आरबीआई इन्फ्लेशन की तरफ देखता है कि इन्फ्लेशन को हम काबू में कैसे करें, ये उनका नॉर्मल टारगेट होता है। लेकिन इस वक्त वो क्योंकि पूरे हालात बदल गए हैं पूरे विश्व भर में भी और हमारे देश में भी, तो हमें देखना है कि अब ग्रोथ कैसे आए। तो आरबीआई भी ग्रोथ की तरफ उनकी आंख, उनके फोकस इस वक्त इस ग्रोथ के ऊपर है। Sushma, just looking at the profit-led GST collections that you mentioned for the 2 months of October and November, including bounce back in GDP figures, even though there's a technical recession, if you want to call it. Just coming back to the banking sector, because you mentioned the central bank, the RBI. Today in stock market performance, the BSU, the public sector undertaking bank index, went up by 7%. What are the reasons? Is it because of a decline in net performing assets, or
Are we seeing recapitalization of the banks? What is the reason behind the PSU banking index picking up today? Well, I think the immediate impetus for today's rise is the fact that Canara Bank had issued a QIP, that's a qualified institutional placement, for 2,000 crores, and they got a very, very good response. Now, that indicates that there is an appetite for these kind of issues by banks, and therefore, and it's a public sector bank, and therefore the response by other public sector banks will also be proportionately good. So that would be I think the immediate reason for today's bump in PSU banking. But I think banking as a sector has been showing good performance over the last few days, and that is linked basically to the fact that the economic indicators are showing improvement because, after all, banking is the source from which you expect everything to grow. You expect credit flows to start first and then the rest of industry. So banking is the key sector of the economy, and I think that is reflective of the good economic performance that we are seeing. सुषमा जी, हालांकि आरबीआई ने अपने पॉलिसी रेट्स को ज्यों का त्यों रखा है, लेकिन फिर भी अभी जो रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो दो दशक के लोएस्ट रेट्स हैं और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ी है, पेंट अप डिमांड भी है। तो आपको लगता है कि अब जो हम एक ग्रीन शूट्स क्या हम कैपिटल एक्सपेंशन में देखने की उम्मीद कर सकते हैं? ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि एक मेजर स्टील कंपनी, एक मेजर सीमेंट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनीज है, उन्होंने कैपेक्स अनाउंस किया है काफी बड़े पैमाने पर। तो आपको लगता है कि जो कैपिटल एक्सपेंशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की उम्मीद कर रहे थे सब इकोनॉमिस्ट, शायद वो अब शुरू होगी? हाँ, वो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये ग्रीन शूट्स तो थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसको हम जैसे अंग्रेजी में कहें फ्रैजाइल रिकवरी है इस वक्त। जब तक ये 2-3 महीने नहीं चलेगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये सस्टेनेबल है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। L&T फॉर इंस्टेंस, उन्होंने कहा है कि उनकी ऑर्डर बुक बहुत बड़ी हुई है, 3.5 लाख करोड़ शायद उनकी ऑर्डर बुक है। और उन्होंने भी कहा कि अभी आज उन्होंने कहीं इंटरव्यू में कहा, L&T के जो किसी स्पोक्स पर्सन ने कहा कि उनको भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि उनके प्रोजेक्ट इतने जल्दी इनकी रिवाइवल होगी और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इतनी तेजी से चलेगी। तो ये सारे क्षेत्रों में सब लोग यही कह रहे हैं कि उनको उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी ये जो रिबाउंड होगा। अगर आप देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में पैसेंजर व्हीकल्स का इतनी सेल्स उनकी काफी बढ़ गई हैं। 2 व्हीलर्स इतनी नहीं बढ़ी हैं जितनी 4 व्हीलर्स की बढ़ी हैं। 2 व्हीलर्स शायद अभी उनको पिछले साल के लेवल पे पहुंचने के लिए अभी 20% का थोड़ा गैप है, लेकिन बड़े व्हीकल्स, हेवी व्हीकल्स भी बढ़ गई हैं। तो ये काफी रेंज में ये जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में ये इंडिकेटर्स तो आ रहे हैं। Well, we're heading for a short public service advertisement on COVID-19, so please stay tuned on Market Mantra. 3 steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, 2 gaz ki duri to maintain social distancing, maintain hand and face hygiene. Welcome back to Market Mantra. We're talking to our expert, Sushma Ramachandran, about market performance today. Sushma, just looking at the rise in the markets that we're seeing now at all-time highs, are we likely to see corrections in the remainder of the week or even next week? How would you advise investors at this level, whether big or small? Well, I think that investors must, whether they are small or big, must be prepared for some correction now. I won't necessarily say this week or the next, but within the next 10 days, there's bound to be a correction because the market cannot rise indefinitely. There has to be some profit taking, and so it would be good for the market if there is, a break in this consistently rising trend, and that I think is something that investors have to watch out for.
सुषमा जी, आप कह रही हैं कि जो गिरावट आएगी भी वो एक हेल्दी करेक्शन ही होगी, क्योंकि क्या अभी हम कह सकते हैं कि ये जो बढ़त है ये स्टेबल है? क्योंकि पिछले 5 हफ्तों से लगातार शेयर बाजार बढ़ रहा है। क्या कहीं आपको कहीं बबल क्रिएट होने की या कोई मार्केट क्रैश होने की एक आशंका तो नहीं दिखाई देती? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई आशंका नहीं है, क्योंकि जिस बेसिस पे ये मार्केट बढ़ रही है, जैसे मैंने कहा, ये 2-3 वजह हैं। ये वैक्सीन आ रही हैं, और वैक्सीन का मतलब है कि जो इस वक्त के जो हालात हैं, जिसमें लोग बाहर नहीं जा सकते, जिसमें पूरी तरह काम नहीं हो सकता, वो हालात बदल जाएंगे। तो ये तो हमें मालूम है कि ये तो आना ही है, वैक्सीन आ ही रही हैं, तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेबल इंडिकेटर है जिस पे मार्केट्स बैंक कर रही हैं। दूसरा ये है, जो बाकी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं हमारे देश के अंदर, वो भी काफी मजबूत हैं। जैसे मैंने कहा, थोड़ा इस वक्त मैं इसको फ्रैजाइल क्यों कहूंगी, क्योंकि जब तक 2-3 महीने नहीं चल पाएंगे तब तक हम सस्टेनेबल नहीं कह सकते, लेकिन दे आर इन द राइट डायरेक्शन। तीसरी बात जो है कि ये जो ग्लोबल क्यूज हैं वो भी मजबूत तरह के हैं। जैसे अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन हो रहा है, अमेरिका में प्रोस्पेक्ट्स ऑफ स्टिमुलस हो रहा है, तो ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल ये चीजें बदलने वाली नहीं है। तो मैं ये नहीं समझती कि एकदम से मार्केट क्रैश होगा। आगे की अगर कुछ और मतलब बदलाव आ गया विश्व भर में कोई आर्थिक स्थिति में, ये तो हम कह नहीं सकते। So would you say that the mid cap and the small cap index, which fell marginally less than 1%, is indicative of a correction now setting into the market? Yes, that is bound to be there, and there should be a small correction in the market. We do anticipate that. There has been one of the interesting elements of the market this year, which beginning from March, is that you have a large number of very new and young investors, because around March, when everything was locked down in India, young people started moving their funds from the normal safe havens of probably bank deposits and maybe even real estate, because there was no movement in those areas. And you have a huge new class of investors. I really cannot quantify right now, but in a huge numbers of young investors who came into the market and who are utilizing online platforms to learn about the market. So you have it's a very interesting development that there are, and in fact there is data on this to show that so many new Demat accounts have been opened over the period, say from April to June this year. So these people are in the market, and they are also very interesting. They are more knowledgeable, as even though they are new players, they are very knowledgeable because they are being guided by these online platforms. So I think these are very interesting days for the stock market. It is, of course, on a rising trend, just a bullish trend just now. And but as I said, there is likely to be a correction shortly. और एक और मैक्रो इकोनॉमिक मेट्रिक है जिसपे आपकी टिप्पणी चाहेंगे, इन्फ्लेशन 7.6 जो लेटेस्ट फिगर आया है, एंड आरबीआई ने हालांकि अब जो प्रोजेक्शंस दिए हैं वो एक स्टेडी डिक्लाइन दिखा रहे हैं आने वाले दिनों में, लेकिन उन्होंने जो 2 महीने पहले प्रोजेक्शंस दिए थे उससे थोड़ा सा बढ़ा दिया है। क्या आपको लगता है कि इन्फ्लेशन आगे जाके एक चिंता का विषय हो सकता है? हाँ, ये जरूर हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जैसे मैंने कहा, आरबीआई अपना फोकस इन्फ्लेशन पे नहीं रख रहा, वो अपना फोकस ग्रोथ पे रख रहा है। और ये इन्फ्लेशन जो है आपकी इस वक्त शायद फूड प्रोडक्ट्स में ज्यादा है, और इसका मेरे ख्याल सीजनल जो मूवमेंट है, हो सकता है कि आगे वाले दिनों में थोड़ा डिक्लाइन हो, क्योंकि सीजनल वेजिटेबल्स, सीजनल products will come, food products will come into the market. पर इसके ऊपर जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब रुक करते हैं करेंसी बाजार का और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 37 पैसे मजबूत होकर 73 रुपये 53 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। रुपये में ये मजबूती प्रमुख रूप से घरेलू शेयर बाजारों में खरीदारी के बल पर आई।
6 अन्य प्रमुख मुद्राओं के समूह की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाले डॉलर सूचकांक में दिन के कारोबार में 0.1% की वृद्धि दर्ज हुई और ये 90.88 के स्तर पर पहुंच गया। सुषमा जी, हालांकि डॉलर सूचकांक में आज हल्की सी मजबूती आई है, लेकिन डॉलर डॉलर इंडेक्स 2.5 वर्षों के न्यूनतम स्तर के करीब है। क्या लगता है आपको अभी रुपए का कैसा आगे चल के आपको ट्रेंड दिखाई देता है और ये कैसे अफेक्ट करेगा हमारी इकोनॉमी को? तो इसमें इस साल ये बहुत ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि रुपया कहीं ज्यादा डिप्रिशिएट नहीं हुआ, इनफैक्ट अप्रिशिएट ही हुआ है, ज्यादातर स्टेबल रहा है। मार्च से लेके अब तक 75 से लेके अब 73 पे आ गया है, 73 टू द डॉलर, और अप्रिशिएट ही हुआ है। लेकिन अप्रिसिएशन की वजह से एक तो फायदा है क्योंकि जो हमारे आयात हैं वो सस्ते हो जाते हैं, पर लेकिन हमारे निर्यात जो है वो कंपेटिटिव नहीं होते, जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उनको फायदा नहीं होता। तो ये एक तरफ से अच्छाई भी है, स्टेबिलिटी ऑफ द रूपी, और दूसरी तरफ ये है कि एक्सपोर्टर्स थोड़े से निराश हैं। Well, apart from the FII inflow into the market, but they're also seen as fly-by-night operators, FDI has gone up by 140% in a profit-led economy right now of corporates, but wages have declined. You see that as another factor which is really strengthening the rupee to the dollar? Absolutely. The fact that FDI inflows are continuing during the pandemic at a time when the economy has been contracting, it is definitely a positive development, and it has also helped, as you said, foreign institutional investors. The kind of funds that they bring in are easy to bring in and easy to take out. Foreign FDI that comes into the country is something that is far more sustainable and long-term investment. So it is certainly, brings greater support for the rupee. आगे बढ़ने से लेंगे एक छोटा सा विराम। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों का। वैश्विक बाजारों में आज गिरावट का रुख था। कोविड-19 संक्रमणों में भारी वृद्धि और लंदन और ब्रसल्स के ब्रेक्सिट से जुड़े संकट में फंसे होने का विपरीत असर बाजारों पर दिखाई दिया। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.6% की भारी गिरावट में रहा और हांगकांग का हैंगसेंग 0.8% के नुकसान पर बंद हुआ। जापान का निकेई सूचकांक 0.3% के नुकसान में रहा और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.2% की गिरावट पर बंद हुआ। हालांकि सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां भी गिरावट का रुख था। लंदन के फुटसी में 0.4% की मंदी थी। फ्रांस का कैक 0.6% के नुकसान पर था और जर्मनी के डैक्स में 0.2% की गिरावट चल रही थी। Very briefly, tell us about the Brexit tussle right now, called the Brexit Purgatory. There is an accusation by the EU that UK has breached the conditions of the agreement of break-off between the EU and Britain. Could you just briefly tell us what it's about? The Brexit imbroglio has been continuing for quite some time. The extensions have been going on to finalize the actual exit. And now we had a situation where the British Prime Minister phoned up his the EU counterpart and had a discussion on the final date, but it still has not been. I mean, no agreement could be reached. There are various issues on which there is disagreement, and one, of course, is whether the issue of Northern Ireland remaining, as part of the EU is still a sticking point over there. So there are a host of issues. It's very difficult to explain as to one particular issue that is affecting this whole exit of the UK from
the European Union. And I think, unfortunately, the United Kingdom is the one that needs to take a decision on various issues, and they need to be more flexible about it. The UK, I think the UK government has tried to show to its people that it is taking a hard line with the European Union, and that is largely what is delaying the whole issue. सुषमा जी, जो कोविड-19 इन्फेक्शंस अभी भी काफी बढ़ रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज में, बाकी देशों में, और वहां पे नियंत्रण भी लगाए गए हैं, लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन, आपको लगता है फिर से ये ग्लोबल सप्लाई चेन इससे हिट हो सकती है और प्राइसेस के लिए एक दबाव बढ़ सकता है? देखिए, ये हो सकता है, ये मैं मानती हूँ कि ये जरूर हो सकता है, लेकिन इस वक्त अभी ग्लोबल सप्लाई चेन रिवाइव हो गई हैं, और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, ज्यादातर जो मूवमेंट है चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, अमेरिका के बीच में जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो रिवाइव हो गई हैं। कुछ काफी सारी फैक्ट्रीज जो चाइना में थी, अमेरिकन फैक्ट्रीज या यूरोपियन कंपनीज, जिनको डर था कि अगर हम चाइना में रहें तो हमें प्रॉब्लम होगी सप्लाईज में, अपना एक्सपोर्ट करने में, तो अपनी फैक्ट्री शिफ्ट कर ली हैं उन्होंने, और बहुत जल्दी से उन्होंने वियतनाम, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया में अपनी फैक्ट्री शिफ्ट कर ली हैं, और कुछ खैर इंडिया में आए, कम आई हैं, लेकिन कुछ इंडिया में भी आई हैं। तो ये ग्लोबल सप्लाई चेन्स अभी रिवाइव हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि ये एकदम से ये बंद हो जाएंगी। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये जो केसेस खासकर अमेरिका में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और हमें उम्मीद ये है कि अगर जब नया प्रेसिडेंट आएगा तो कुछ वो वहां पर लॉकडाउन या कुछ कर देंगे, या पार्शियल लॉकडाउन कुछ करेंगे, जिससे चेन ऑफ ट्रांसमिशन बंद हो जाएगा। यूरोप में अब ये पॉजिटिव बात ये है कि वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है शुरू हो गया है। यूके में लॉकडाउन हो रहा था, मतलब इवनिंग लॉकडाउन, वो शायद कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है शुरू हो गया है, और मेरे ख्याल में ये छोटे देश हैं, तो 1-1.5 महीने में शायद उनकी वैक्सीनेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगी। Let's have a look at the U.S. market now. The Nasdaq climbed to a record high yesterday after investors moved into mega-cap growth stocks, even as a new round of COVID-19 restrictions underscored the economic impact of the pandemic. The Nasdaq Composite Index gained 0.5%, while the S&P 500 slipped marginally by 0.2%, and the Dow Jones Industrial Average fell 0.5%. Let's have a look at the oil market now. Oil prices today logged modest losses, erasing the positive sentiment gained in the previous week. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $48.60 per barrel, while WTI crude prices were around $45.60 per barrel. Very briefly, do you see oil prices crossing the $50 mark? That I think can only happen after 2 or 3 months, not immediately, probably after the OPEC meeting next month. और अब चलते हैं प्रेशियस मेटल्स की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कोई खास बदलाव नहीं होने के बीच सोने और चांदी के मूल्यों में आज गिरावट आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोना दिन के कारोबार में 212 रुपए सस्ता होकर 49,734 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी भी 826 रुपए की गिरावट से 64,673 रुपए प्रति किलो पर आ गई। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मामूली बढ़त के साथ $1,867 प्रति आउंस पर, और चांदी भी मामूली वृद्धि के साथ $24.40 प्रति आउंस पर थी। जो सोने में हमने गिरावट देखी है अपने ऑल टाइम पीक लेवल से, क्या लगता है आपको अब सोने का आकर्षण कम हो गया है? So gold is going to lose its luster, Sonu, because we are coming out of the pandemic. So as soon as we come out of the pandemic, gold will also lose its luster, क्योंकि ये safe haven asset है। समय समाप्त हो गया है, सो हमें चर्चा को भी यही समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुषमा जी आने के लिए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। Thank you, Sonu. And before we close, a reminder of the headlines. Key domestic indices hit fresh lifetime highs even as global cues were negative. Sensex achieves 45,500 mark. Nifty ends near 13,400 level. Rupee strengthens 37 paise against US dollar, and global stocks logged losses amid surging COVID-19 infections and concerns over Brexit. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra, Market Mantra.
Market Mantra.